Good morning students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So yesterday we have done multiplication sums with regrouping. So I hope the concept was clear, and today we will do the multiplication of a 3-digit number by a 1-digit number without regrouping. आज हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3-डिजिट नंबर. अब हम 3-डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाय 1 डिजिट से, मतलब उसका मल्टीप्लायर ओनली 1 डिजिट होगा. और फर्स्टली हम क्या करेंगे? विदाउट रीग्रुपिंग. फर्स्टली क्या करेंगे? विदाउट रीग्रुपिंग. क्लियर? Regrouping. So firstly we take a number 2, 4, 3 multiply by 2. अब हम क्या करना है? 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो 2, 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2. सो फर्स्टली वी राइट इन अ कॉलम. कॉलम में क्या? 100, टेंस एंड वंस. सो इन 100 प्लेस 2, in tens place 4 and in ones place 3, and multiplier is 2. 2 is the multiplier. So 2 3s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 2 3s are 6, so 2 4s are 8, and 2 2s are 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So our answer is 486. 243 is the multiplicand and 2 is the multiplier, and our product is 486. इसमें हमें कुछ भी रीग्रुप तो नहीं करना पड़ा, हमें कोई कैरी नहीं फॉरवर्ड करना पड़ा कहीं पर. तो इसको क्या कहते हैं? विदाउट रीग्रुपिंग सम. क्या कहते हैं इसको? विदाउट रीग्रुपिंग सम. So we take another numbers. 132 multiply by 3. 132 multiply by 3. Firstly we write in a column 1 in 100 place, 3 is in tens place and 2 is in ones place, and multiplier is 3. So we multiply this number by 3. So 3 2s are 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 3 2s are 6, so 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So our product is, our answer is 396. Our answer is 396. Firstly we will do 243 multiply by 2. So our answer is 486, and other 132 is multiplied by 3. Our answer is 396. दिस इज द विदाउट रीग्रुपिंग. इसमें हमने कुछ भी रीग्रुप नहीं किया है, हमने कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है. ये हमारे सिंपल सम्स है विदाउट रीग्रुपिंग. 322 मल्टीप्लाई बाय 2. 322 मल्टीप्लाई बाय 2. फर्स्टली वी राइट इन अ कॉलम 100, tens and ones. 2 is in ones place, 2 is in tens place, and 3 is in 100 place. Multiply by 2. So 2 2s are 4, 2 2s are 4, and 2 3s are 6. 2 2s are 4, 2 2s are 4, and 2 3s are 6. अब यहाँ पर भी आपको कुछ रीग्रुप नहीं करना पड़ा ना, कोई हमने कैरी नहीं किया, किसी को कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. तो दिस इज मल्टीप्लिकेंट, 2 इज द मल्टीप्लायर, एंड द आंसर इज 644. क्लियर? नेक्स्ट इज 111 मल्टीप्लाई बाय 6. अब 111 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. कैसे? 100 tens and ones. Firstly we write in a column. 1 is in 100 place, 1 is in 10 place, and 1 is in ones place. Multiplier is 6. Multiply किससे कर रहे हैं हम? 6 से. So 6 ones are 6, 6 ones are 6, and 6 ones are 6. Our answer is 666. Clear? Here we multiply by 2. 2 2s are 4, 2 2s are 4, and 2 3s are 6.
Here we multiply by 6. 6 ones are 6. 6 ones are 6 and 6 ones are 6. Our product is 666. Clear? Open your maths notebook. Write date and classwork. Chapter 7 multiplication. Multiplication of a 3-digit number without regrouping. आज हमारा टॉपिक क्या है? हेडिंग क्या है? हेडिंग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3-digit नंबर विदाउट रीग्रुपिंग. आज हम मल्टीप्लिकेशन के सम्स करेंगे विदाउट रीग्रुपिंग 3-digit नंबर वाले. क्लियर? Our first sum is 432 is multiplied by 2. 432 is multiplied by 2. Firstly, we write in a column. Solution 100, tens and ones. 432 multiplied by 2. 2 twos are 4. 2 threes are 6. 2 fours are 8. So our answer is 864. 2 twos are 4. 2 threes are 6. 2 fours are 8. जब भी हमें ऐसे दिया होता है सबसे पहले हम कॉलम में लिखते हैं. नंबर्स में दिया है देन हम कॉलम्स में लिख रहे हैं. क्लियर? 432 is the multiplicand and multiplier is 2. So 2 multiplied by 2 is 4. 2 threes are 6. 2 fours are 8. So our answer is 864. Our answer is 864. One zero four. 104 multiplied by 2. 100 tens and ones. 104 multiplied by 2. 2 fours are 8. 2 0. मैंने आपको बताया था अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0. हम 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर इज 0. 2 ones are 2. 2 ones are 2. 2 twos are 4. 2 threes are 6 and 2 fours are 8. So 2 multiply 0 is 0 and 2 ones are 2. So our answer is 208. Next is 311 multiplied by 3. So firstly we write in a column 100 tens and ones. 3 1 1 multiplied by 3. 3 ones are 3. 3 ones are 3 and 3 threes are 3 ones are 3. 3 twos are 6 and 3 threes are 9. So our answer is 933. Our answer is 933. Next is 121 multiplied by 4. Firstly we write in a column 100 tens and ones. 1 2 1 multiply by 4. 4 ones are 4. 4 twos are 8 and 4 ones are 4. So our answer is 484. 4 ones are 4. 4 twos are 8. 4 ones are 4. Our answer is 484. So students, today
today we will do multiplication of a 3-digit number without regrouping. I hope the concept was clear. Thank you. Have a nice day.